Hello student. So today in the chapter solid state we are going to complete our packing efficiency topic. Packing efficiency. In last topic or in last video we have discussed about the packing efficiency of the simple cubic unit cell. So today we will discuss about another two type of the structures, cubic structures, FCC and BCC. Okay, let's take first FCC. FCC means face centered cubic. Okay. So FCC, we have done that packing efficiency have, what is the formula? Z into volume of sphere by volume of cube. ये last time हमने discuss किया था. Okay, Z is the number of atoms, volume of the sphere, and by the volume of the cube. Now, first of all, we have to find out Z. For an FCC, Z is equal to four. Okay, how? Because 8 atom will be on the corners, 8 corners, and their contribution is 1 by 8. There will be 6 face, and each atom on the face have half contribution to the unit cell. So total will be 4 number of atom in FCC. So Z is 4. And volume of the cube, volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube, and volume of the cube is a cube. So let's find out the packing efficiency. See, suppose we have 4 atom on the corners and 1 atom present on the face. So this atom in the center is on the face and these 4 atoms are of the corners. हमने एक फेस को यहाँ पर लिया. Now, अब हम यहाँ से जो A है, ओके, एज लेंथ ये निकालेंगे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल जो है उसको कंसीडर करेंगे. इसको हम A, B एंड C से डिनोट करते हैं. ओके, ये रेडियस से. इफ यू सी फ्रॉम हियर टू हियर वी हैव दिस एटम रेडियस. जो स्पेयर है उसका रेडियस, अगर इसको सपोज क्या करें R से डिनोट करें, दिस ये जो रेडियस होगा इसको भी R से, ये भी R डिनोट होगा, और ये भी रेडियस है तो इसको R से डिनोट करते हैं. ओके, दैट मीन्स AC ये जो है, ओके, इज इक्वल टू 4R, and we know that BC is equal to A and AB is equal to A as length equal होंगे. Now if we find out the AC, अगर AC निकालें, see by the Pythagoras, if we find out the AC, we have AB square plus BC square, and we know that AB is equal to A and then square, and BC is equal to A, then we have square. So we get (2a square under the root, and इसको अगर हम सोल्व करेंगे then we get √2a is equal to AC. Now we get √2a is equal to AC,
and from here we know that AC is equal to 4R. So root 2A is equal to 4R. From here, if you find out the value of A, then A is equal to 4R by root 2. So यहाँ से हमें क्या मिला? A की वैल्यू मिल गई. Okay. Now we will use this A value in the formula to find out the packing efficiency. Okay. So by keeping इसका यहीं पर क्यूब करें तो A का क्यूब करते हैं 4R by root 2. If you do the cube, what we get? We get 32 by root 2 R cube. Okay. Now 32 by root 2 and R cube, if you put this value here, so by putting in the formula we get Z, we get 4, and volume of the sphere is 4 by 3 pi R cube by 32 root 2 R cube. Okay, R cube से R cube काट दें. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, if we solve it, we get 0.74, or if you say percentage, we get 74%. Okay, that means the packing efficiency of the FCC comes out to be 74%. तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकली हमारी FCC की 74%. Okay, now we'll go to the next packing, that is our BCC. Okay, our next is BCC, means body centered cube. Okay, that means there will be one atom in the center of the body. So packing efficiency is Z into volume of sphere by volume of cube. So let's find out the Z in BCC. So there will be 8 atoms on the corner plus 1 atom in the center. So total there will be 2. Z will be, total number of atom will be 2 in BCC. So after this, let's draw the diagram for BCC. Suppose we have डायग्राम ड्रॉ करें. Okay, so in this diagram there will be 8 atoms on the corner and 1 atom in the center. This is the 1 atom in the center. Now we have A, इसको A, B and इसको C कंसीडर करें, इस कॉर्नर को, एंड दिस कॉर्नर भी कंसीडर D. तो अगर इनका यूज करके अगर हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए A फाइंड आउट करेंगे, ये ओके, तो हमारे पास एक ये है और एक ये ACD इस ट्राइंगल, इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, अपना A फाइंड आउट करेंगे. सी ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था AC जो हमारा निकला था, ठीक है. अब AC निकालेंगे AC, तो ये क्या है, AB क्या है, इक्वल है
AB is equal to A, and this BC is equal to A because they are edge length. Okay, so AC will be A square plus A square, and then we get root 2A. ये अभी हमने फाइंड आउट किया था. नाउ AD, सो AD जो हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ओके, नाउ AC जो भी हमने फाइंड आउट किया है वो क्या होगा? तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2A स्क्वायर प्लस CD क्या है? A के इक्वल है, and it's equal to A square. Then we get total root 3A. Okay. Now AD comes to be root 3A, and this is AD. And if you see there are 3 spares, और अगर यहाँ से अगर हम R इसका हाफ R लेके चलें तो जो AD होगा वो किसके इक्वल होगा? 4R के इक्वल होगा. देखिए यहाँ से यहाँ तक एक R है, यहाँ से ये एक R है, ये जो R है, इन 4 R's को अगर हम ऐड करें, 4 रेडियस को ऐड करें स्पेयर को, तो किसके इक्वल है? AD के इक्वल है. दैट मीन्स दिस root 3A is equal to 4R. Okay, now we can find out the value of A from here is equal to 4R by root 3. So here we get the value of A. Now we put this value of A into the formula. Okay, we get 2 into 4 by 3 pi R cube by, इसका क्यूब करें पहले. फर्स्ट वी डू द क्यूब ऑफ दिस A. 4 by R root 3 क्यूब करते हैं, then we get 64 R cube by 3 root 3. Now we put this value 64 R cube by 3 root 3. Okay. Now, if we simplify this, we get the answer 0.68, or in percentage we get 68%. That means the packing efficiency of BCC is 68%. So this is the packing efficiency of BCC. So in next chapter, next video, we will discuss another topic in which we will find out the density of the atoms.